Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. How are you? Hope to Almighty Allah that you are well and enjoying the coming season of winter. First of all, I am sorry to you all people that I remain absent about whole week due to some official busy schedule, and after that I am here for you people on the screen. Now today I am going to discuss type of test. First of all, we have already discussed in part 1 type of test. In that type of test, we have discussed objective type test items. Now I am going to discuss complex learning, how to get response in the complex learning outcome. Complex learning outcome, first of all, again we will discuss what is the purpose of classroom test. Very simple. Purpose of classroom test is to check the prerequisite skills and educational objectives which the students have achieved during the course of action in the classroom. It includes all formative as well as summative instructions, summative test, in which the teacher checks the students' learning outcomes, difficulties which they face in the classroom, and at the end to award the grade. It is also summative assessment. All these type of assessment is checked through test. And now here is what is to how and what is to measure the complex learning outcome. The complex learning outcome, in fact, is the higher order learning, in which the student integrate set of learning goals, multiple performance objectives, different coordination among the test and integration of separate skills and constitute real life task performance. All kind of performance is checked through this assessment task. It has further 3 types. Number 1, interpretive exercise. Number 2, essay question. Number 3, performance-based assessment. Let me speak in Urdu. Measuring complex achievement. It means that we are going to check the complex learning outcomes. जब एक टीचर complex learning outcome चेक करता है तो इसका मतलब है हायर ऑर्डर थिंकिंग को हम चेक कर रहे हैं. तो हायर ऑर्डर थिंकिंग में क्या होता है कि सबसे पहले तो टीचर जो है जितने भी इंस्ट्रक्शनल लर्निंग गोल्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करता है, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आइटम्स जो हैं उनको टेस्ट आइटम्स को इन्वॉल्व करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है ताकि स्टूडेंट्स की कम्प्लेक्स अचीवमेंट को हर लेवल पे और हर साइड से चेक किया जा सके. इसकी 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 है इंटरप्रेटिव एक्सरसाइज, नंबर 2 है ऐसे क्वेश्चन, नंबर 3 है परफॉर्मेंस बेस्ड assessment. First of all, we will look the interpretive exercise. It is most complex task question. Interpretive exercise is presented the given situation to interpret. It means the teacher displays something before the students, and that in that image or picture drive some questions and ask the student to respond that questions. It means an interpretive exercise consists of set of data or information which we call a display. Means on display screen we display something followed by series of problems and questions. First of all, there is some image, some drawing before the student, and a series of questions is presented before the students and ask them to keep in mind that image. After observing that image, respond to the question which is given below. Then student respond to the questions. Interpretive exercise consists of series of objective items based on common set of data collected display. Data may in the form of written material, tables, charts, graphs, maps, cartoon, prose, poetry or pictures. Identify relationship in data, recognize valid conclusion to appraise assumption and influences, and to detect proper application of data. Ensure that all students will be formed with the same task, concentrated with the same task.
Interpretive exercise are best used for higher level thinking, as I have earlier told. What learning outcome can be interpretive exercise measures? It means it measures the application of principles and methods, compare and contrast different method selection and the work of different authors, designing experimental procedures, draw the conclusion from that procedure. Let me speak in Urdu. इंटरप्रेटिव एक्सरसाइज बुनियादी तौर पे हायर ऑर्डर लर्निंग को चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज होती है। इसमें क्या होता है कि एक इमेज जो है वो स्टूडेंट के सामने रखा जाता है। इमेज भी हो सकता है, रिटर्न मटेरियल भी हो सकता है, टेबल्स में, चार्ट्स में, मुख्तलिफ चीज़ें जो भी टीचर चाहे इस्तेमाल कर सकता है। और उसके नीचे एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन होती है और स्टूडेंट को कहा जाता है कि उस कंटेंट से, रिटर्न मटेरियल से, या उस इमेज से, या उस टेबल से, या उस ग्राफ से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्योरली थिंकिंग एंड इमेजिनेशन ऑफ दैट स्टूडेंट, हाउ ही थिंक्स अबाउट दैट। तो एप्लीकेशन में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसमें अप्लाई किए जाते हैं प्रिंसिपल और मेथड, यानी बुनियादी प्रिंसिपल और मेथड को इसमें अप्लाई किया जाता है। या स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि कोई एक पिक्चर उसके सामने रखी जाती है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा मेथड जो है वो यूज़ हो सकता है। डिफरेंट जो है मटेरियल उसकी आपस में कंट्रास्ट या उसकी सिलेक्शन के बारे में स्टूडेंट को कहा जा सकता है, उसके कंपैरिजन के बारे में स्टूडेंट से पूछा जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं और डिफरेंट कंक्लूजन जो है स्टूडेंट को कहा जाता है कि उससे डिराइव करे। बुनियादी तौर पे मुख्तसरन अगर मैं ये अर्ज़ करूँ तो इंटरप्रेटिव एक्सरसाइज बुनियादी तौर पे प्योरली स्टूडेंट मेड एक एक्सरसाइज होती है, जिसमें उसके सामने कुछ कंटेंट या इमेजेस या चीज़ें रखी जाती हैं और सवाल दिए जाते हैं और स्टूडेंट को कहा जाता है कि उनको ऑब्ज़र्व करके, देख के, पढ़ के, स्टडी करके उन सवालों को रिस्पॉन्ड किया जाए। And next is the essay questions. It is widely used at higher level. The essay question requires written responses which can consist of few short paragraphs to 2000 words. There are two major purposes by using research question. One purpose is to assess student understanding of and ability to think about subject matter content. The other purpose is to assess student writing abilities. In essay question, very simple. Essay question written is the teacher demands the written responses from the student in a very short paragraph or in a very large in 1000 words. And there are the major purpose. One purpose is to assess the understanding ability of the student, means how much the student has understand the content, or how much the student think about, ability to think about that content. And number two, what is the writing ability of the student, how the student can or change the writing abilities. The uses, it is used to comprehend the material, it is used to check the writing skills, to evaluate something, to analyze something. It is used ability to recognize, organize facts and ideas. It is also vocabulary checking. It is problem solving. It is also problem solving technique. Let me speak in Urdu. ऐसे क्वेश्चन बुनियादी तौर पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसको या तो कहा जाता है कि पैराग्राफ इतने लिखें, या उसे ओपन एंडेड डिस्कशन दी जाती है कि डिस्कस करें। और इसको डिस्कस करवाने के बुनियादी तौर पे दो मकसद होते हैं। एक तो स्टूडेंट की एबिलिटीज़ और उनकी थिंकिंग एबिलिटी और उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाए, और दूसरा ये है कि स्टूडेंट की राइटिंग एबिलिटी को चेक किया जाए। और इसका इस्तेमाल ये होता है कि जब आपने किसी का कॉम्प्रिहेंशन लेवल चेक करना है, किसी की राइटिंग स्किल चेक करनी है, किसी की एवेलुएशन जो स्टेमिना है उसको चेक करना है, उसके एनालिसिस को चेक करना है, उसकी एबिलिटी को चेक करना है, वोकैबुलरी को चेक करना है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन का इस्तेमाल होता है। हेयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ ऐसे क्वेश्चन. It means the test taker can elaborate and provide detailed answer. Means that the person who is giving test, he has to provide detailed answer. There is minimization of guess and other selection of work. Moreover, the test taker can review individual responses from each user. It can be used for all types of subjects, and it takes less time to create a question. Means very
simple for the teacher to write the questions to make the test attempt. It has also some disadvantages. In disadvantages, it takes longer time to evaluate. Graded manually online, take longer to answer, can be graded unfairly, question can be read differently, resulting in different. It means it has many advantages. First advantage is that it is very difficult to grade, to give the numbers. Number two, it takes longer time to answer the questions. Number three, even it covers all the material, but uh, there are some certain things which can be left behind to cover the things. Uh, um, and at the end, user writing skill could affect what they are typing to, trying to express. लेट मी स्पीक इन उर्दू। इसके जो एडवांटेजेस हैं उनमें जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि टेस्ट टेकर जो है वो अपना डिटेल रिस्पांस दे सकता है, अपनी जो एक डिस्क्रिप्शन है वो सबके सामने रख सकता है। इसमें ना गैस का आंसर बहुत कम होता है, यानी उसको एग्जैक्ट चीज़ें जो हैं वो देना पड़ती हैं, गैस नहीं कर सकता। फिर इसमें इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उनको रिव्यू किया जा सकता है कि इसकी ये सारी अपनी ओपिनियन है या कहीं से इसने चीज़ों को लिया हुआ है, तो सारे एक सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो सकता है। इसके जो डिसएडवांटेजेस मेन है उनमें ये है कि इसको नंबर लगाना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरा ये है कि इसमें टाइम बहुत लगता है, और बायसनेस बहुत ज़्यादा होती है एग्जामिनर की तरफ से, तो ये चीज़ें इसके डिसएडवांटेजेस में आती हैं। Here is the performance-based assessment. Performance-based assessment measures student ability to apply the skills and knowledge learned from a unit. What kind of abilities and what kind of skill the student have learned from the particular chapter or unit or book. Performance-based assessment includes the problem-solving process. It requires the student to create a product or answer a question that will demonstrate the student's skills and understanding. इट आल्सो इंक्लूड द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। कैसे है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कि एक स्टूडेंट जो है उसको कहा जाता है कि आप कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करें, आंसर दें, सवालों का जवाब दें। यानी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट बुनियादी तौर पे एक क्लास के अंदर जो कुछ आपने मटेरियल दिया है उसको चेक करने का एक मेथड है कि उस बच्चे ने किस हद तक जो आपने चीज़ें उसको लर्न करवाई हैं, उस स्किल्स को और उस नॉलेज को उसने किस हद तक डाइजेस्ट किया है या ग्रेस्प किया है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जो है ये कम्प्लेक्स चीज़ है, बट इसको ऑथेंटिक भी होना चाहिए और होती भी है, और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है, ओपन एंडेड होती है और टाइम बाउंड होती है, यानी यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन सर्टन टाइम लिमिट्स। तो दीज आर सम कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स। हाउ टू get guide the performance based testing. Performance based learning relies on the acquisition of skills and development of work habits, balance in literacy, content knowledge, work habit, performance. It has also advantages and it is also disadvantages. Let me speak in Urdu कि परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्टिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं कि वो बैलेंस होती है लिटरेसी में, उसमें कंटेंट नॉलेज को हम ज़्यादा चेक करते हैं, स्टूडेंट की वर्क हैबिट जो है वो हमारे सामने आती है, और उसमें हम परफॉर्मेंस टास्क देते हैं। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं स्टूडेंट और टीचर के लिए। स्टूडेंट के लिए क्या हैं कि इट हेल्प टू अप्लाई इन क्लासरूम लर्निंग टू सिचुएशन आउटसाइड द क्लासरूम, यानी ये क्लासरूम के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको हम क्लासरूम के बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं। और टीचर के लिए कि ये हमेशा टीचर को एक डीप इंसाइट देती है कि उसके स्टूडेंट्स को किन लर्निंग की ज़रूरत है, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्टिंग में आपने स्टूडेंट्स की उस पर्टिकुलर यूनिट, उस पर्टिकुलर बुक, उस पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में परफॉर्मेंस, हायर ऑर्डर परफॉर्मेंस लेनी होती है जो स्टूडेंट्स को आपने टीच किया है। एट द सेम टाइम they offer a way for the student to better measure their own understanding and success. While completing a task or project, the student can see where they are struggling. Then they can ask specific question and work harder on enhancing their knowledge. तो जो आखिरी बात है वो ये है कि स्टूडेंट जो हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर अंदाज में मेजर कर सकते हैं। टीचर भी स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर अंदाज में मेजर कर सकता है, और ये स्टूडेंट के लिए इसलिए भी फ़ायदेमंद है कि स्टूडेंट जो है जब स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो वो अगेन जो है अपनी लर्निंग को बेहतर करने के लिए वर्क हार्ड करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।
Thanks for watching and listening. Allah.